लोकायुर्वेद ज्ञान गंगा की इस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत प्रसन्नता है आज हमारे बीच गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बख्शियाड़, जो कि सिराज क्षेत्र में जिला मंडी में स्थित है, वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर राजू एल हमारे साथ में है अपनी टीम के साथ। उनकी टीम में डॉक्टर पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो केवल हम उनकी आवाज सुन पाएंगे। आप दोनों का डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू सर। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि इस कॉलेज के साथ में नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स के जो हमारा ये रीजनल सेंटर है, उस रीजनल सेंटर का एक एमओयू भी साइंड है, जिसमें कि हम मिलजुल करके औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन में, उनके अनुसंधान में और उनके एक तरह से वैल्यू एडिशन के कार्यों में जो भी काम हो सकते हैं, उस विषय में हम एक अनुबंध भी हमने हस्ताक्षरित किया है, जिस विषय में भी हम कुछ प्रयास करने के आगे प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वहां के लोगों को, वहां की जनता को, वहां के किसानों को या दूसरे हितग्राहियों को, दूसरे स्टेक होल्डर्स को हम कोई लाभ दे सके। सो डॉक्टर राजू, आपका स्वागत है। आप मूलतः तो आप केरल के रहने वाले हैं, और लेकिन विशेषता आपकी ये है कि फार्मास्यूटिकल के एक्सपर्ट होने के साथ साथ आप एक किसान भी हैं, और किसान भी आप चाय के किसान हैं। चाय में वैल्यू एडिशन के कारण आपका इन्फ्यूजन्स में और उसके टेस्टिंग में, यानी जितने भी उसके पहलू हैं, आपकी खास दक्षता है। आप उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप उस विषय में कार्य कर रहे हैं, जिसका आने वाले समय में हमारे यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा, मुझे इस तरह की आशा है। तो मैं सबसे पहले सवाल आपसे यही करूंगा कि हमारी चर्चा जो प्रस्तावित है वो ये है कि आपने बुरांस के विषय में, आपके कॉलेज ने, आपके अपने साथियों ने, खास करके डॉक्टर पंकज शर्मा और डॉक्टर जावेद, आपकी टीम ने मिलकर के आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में खूब काम किया है। तो हम उसी से चर्चा को शुरुआत करते हैं कि रोडोडेंड्रॉन पे, बुरांस पे आपके क्या क्या अनुभव हैं। जी, आप शुरू कर सकते हैं। जी सर, rhododendron, it grows from the elevation of 1500 and above, and it has got very potential in making. Traditionally it is being used for medicinal purposes also, like dyspepsia. It is being used in dyspepsia, it is used in vomiting, it is used in for digestion, and it is used to treat menstrual disorder. Traditionally these are being used. To have a value addition to this, with your association, we selected this flower, and we have collected the flowers, we have processed it, and found some interesting findings with value additions. So this value addition could be made with infusions, gulkans, chocolates, and it could be added as coloring agents to many food and condiment products. So these are our findings. And initially to come up, so while collecting the flowers, so we have seen people are collecting the flowers with no scientific manners. They are cutting the trees. These trees, it takes 10 to 15 years to grow, where when a tree is being cut only for the flowers, that gives a drawback to the flora and fauna. So by keeping this in mind, I request the department or anyone who are collecting the flowers to leave 25% of the flower in the tree itself. The reason behind this, the flowers and the seeds are very minute, and when it is being scattered through different natural sources or with animals or humans, it needs a suitable place to grow. Usually it grows in moist, wet, good condition. So now when you cut the tree and pluck away all the flowers, so this damages a lot. So I request only to collect only 75% of the flower in time. So this helps in propagating the plants, and it's scattering the seeds of these plants. One. Second, timing collection. So here, as we have many value additional products, initially when you are using this for juices, it should be collected in time, not over ripened. Over ripened gives some
degeneration of these flowers, so that it will not be suitable for good juice. So it should be collected in proper time. Thirdly, while collecting, these trees and flowers are very fragrant, so many insects and ants are there. So this need to be avoided while collecting. So initially while collection, the person, he need to be trained in such a way that immediate after collection, it need to be withered properly, and the ants and other insects need to be separated out and it should be removed. Fourthly, then after collection, so for the need of purpose, suppose if you are making juice, it need to be taken immediately as fresh. In case you are making it into an infusion, dried flowers, so it should be dried properly, because when you keep the flower at same temperature, it may deteriorate. So proper ventilation, proper withering need to be made in such a way that it could be used in a better way. Next, so after collection, now while processing, so now if you want to have the dry powder or for infusions, it need to be shade dried. So while drying, some techniques need to be used. The flowers need to be scattered properly, not dumped together. While dumping together, because of heat generated over there, the flower fragrance gets disturbed. So it need to be spreaded properly, and it should be dried under shade, for shade naturally, if it's a natural process. If it is, you're having a system in a way that you can with dry it in a controlled temperature, bring it to your labs or in your oven or whatever the facility you have, properly wither it with proper air circulation, it should be dried. So after drying, so here once again, if you are using it for extraction of color alone, so at particular point you need to take it out and you need to extract the colors. So if you are using a dry powder, so after proper drying with 1 to 2% of moisture, it need to be powdered. It need to be powdered with 1 to 2% of moisture. So after powdering, so it could be added to general condiments or for flavoring agents in food preparations. So especially when you want to extract the color alone for pharmaceutical purpose or for other what to say formulation purpose like confectionery or something, it need to be extracted. It need to be extracted. Usually we do extract it with hydroalcoholic extraction, or with only water extraction could be made. So for this special purpose like extraction apparatus are used, and it is been the dried powder it could be used. So after extraction you can freeze dry it. For special purpose you can freeze dry it, so that you can use for further usage. So now this is with processing. Now coming to the products. So to make an infusions, so infusions are just you're taking the product and just infusing it in hot water at boiling temperature for 5 minutes. So then by adding sugar or whatnot you can take. So this becomes a good infusion. Here the problem is it has some sorry taste. It has some sour taste. So to avoid this sour taste, now the farmer need to be educated at what time he need to take the flour. Usually when you are taking the flour with perfect juice concentration, so this could be sorry taste could be lessened, or it could be less in weight, so that the person need to be trained when to pluck the flowers. So now with these infusions, by adding additional herbs, so health benefit herbs, this could be a better infusion in future. So this is with the product of rhododendron with value addition. डॉक्टर साहब, जैसे आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही कि रोडोडेंड्रन की या बुरांस की मूल्य संवर्धन जाने के पहले उसके संरक्षण के पहलुओं पे काम करना बहुत जरूरी है। हमें लगभग 25% फूल जो है वो वहां छोड़ने चाहिए, हमें टाइम से फूलों को निकालना चाहिए। और क्योंकि जो हमारे जितने भी ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो सिद्धांत हैं उनके मुताबिक हमें
नष्ट इसको नहीं करना है, इसको बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से हमें हार्वेस्ट करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही उद्देश्य से नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस के लिए किसानों को और जो भी कलेक्शन करने वाले हैं उनको प्रेरित करता है, और जो सिद्धांत आपने बताए हैं उनको किसानों तक ले जाने के लिए भी भविष्य में प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद, क्योंकि ये जो भी समुदाय, जो कम्युनिटीज हमारी इन जंगलों के पास में है जहां बुरांश काफी मात्रा में पाया जाता है, तो एक निश्चित समय तक के लिए ये उनकी आजीविका में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो आपने इसकी कंकॉक्शंस या आपने इन्फ्यूजन्स की बात करी, इसके साथ साथ आपने जो जो नया जो एक डायमेंशन दिया है वो है इसके गुलकंद बनाने का। आपने कहा गुलकंद बन सकता है, आपने कहा कि प्राकृतिक रंग बनाए जा सकते हैं, एडिबल कलर्स बनाए जा सकते हैं, जो कि अलग अलग डिशेस के कलर करने के काम आ सकता है। तो ये सब करने के लिए क्या जो जो रिसर्च आपके कॉलेज में पिछले दिनों में हुआ है, क्या उस रिसर्च का लाभ हम किसानों को आने वाले समय में दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो क्या प्रक्रिया हो सकती है, किस तरह से, हाउ कैन वी मूव अहेड इन दिस डायरेक्शन? So in a way, our college in future need to be an incubation center for giving all these data to farmers or ओके, to the people who are interested in this. जी। तो आप जैसे एक तो प्रयास हमने शायद किया भी है कि हम एक इंक्यूबेशन सेंटर की चर्चा करें और सरकार से आग्रह कर लें कि इंक्यूबेशन सेंटर बनना चाहिए। वो क्षेत्र में जरूरी भी है, क्योंकि युवाओं के पास में बहुत कम संभावना है कि वो कहीं जाकर के इस तरह के ज्ञान को ले सकते हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि फिलहाल जो हमारे जोगिंदरनगर स्थित इंक्यूबेशन सेंटर है, हम उसके माध्यम से भी आपके यहाँ के जो भी इच्छुक लोग हैं उनको भी मदद कर सकते हैं, और आपकी जो फैकल्टी या आपका रिसर्च है वो हमारे इस एंडेवर में, इस कार्य में योगदान दे सकते हैं। तो हम मिलजुल करके इस विषय में कोई ना कोई प्रयास कर सकते हैं। तो क्या इसके सिवाय, तो क्या ये जो जो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने का कोई सिलसिला है, या इस तरह से कुछ काम हम कर सकते हैं आने वाले समय में? Sure, sir, we will do in future. It can be a center so that any farmers of our Ayush department can come to our college and take this technology to them. डॉक्टर राजू, एक जो सिराज का जो क्षेत्र है, ये हिमालय का वो क्षेत्र है जहाँ काफी सारे दुर्लभ औषधियां भी पाई जाती हैं, और उच्च मूल्य होने के कारण, हाई वैल्यू क्रॉप्स होने के कारण यहाँ उनके कल्टीवेशन की भी संभावना है, और जो भी जंगल से निकल रहा है वो उसको सस्टेनेबल तरीके से नियमानुसार निकालने की और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत निकालने की बहुत जरूरत है। आपका कोई फ्यूचर में प्लान है कि मेडिसिनल प्लांट्स में कुछ कॉम्प्रिहेंसिव काम किया जा सके? Sure, sir, we have many plans with our college institution with the academic level. We are in the process pipeline way to establish a high altitude medicinal plants garden. ओके, So while when we establish these things, so people, general public can see this and have know the importance of medicinal plants of such elevation and how it could be helping the farmers as well as the interested company to, and also to academic level. The students can visit and know about the importance of these plants and know about its characters, and it can take these plants to the next level for research. डॉक्टर पंकज शर्मा का कोई एक पुस्तक का भी विमोचन पिछले दिनों हुआ है, वो पुस्तक भी औषधीय पौधों से संबंधित है, उस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir. Dr. Pankaj, he have released medicinal plants of this Siraj Valley, and this it's not the it's in the continuation process of step one. We have published this book, and next step is that we are making a compendium for individual flowers or individual plants. We'll be selecting one individual medicinal plant and whole, what to say, like from collection of it and what all the things whole, it will be in a compendium in the separate article. It will be an article we are shortly we will be publishing with this buras maybe in Jan 1. जी, तो So we have बुरांस, collected जी, maximum information of this rhododendron herbarium,
and this will be in a publication, and it will be given to the general public also by January 1. जी, तो आप इसके सिवाय वुड यू लाइक टू गिव सम सजेशंस फॉर एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल ऑफ योर स्ट्रीम, उस स्ट्रीम से मेडिसिनल प्लांट्स के रोल को देखते हुए would do you want to give some suggestions or any ideas to future work in this sector? Yes, sir. As number of medicinal plants are available in this area and yet to be explored. So I call all the academic people to get in touch with this area and with the departments so that many plants could be explored in the proper scientific way. So many plants are there, it's been used unscientifically. जी, So with scientific knowledge, these plants could be taken to a better level. जी, सो आई थिंक डॉक्टर पंकज शर्मा भी लाइन पे हैं. सो डॉक्टर पंकज, कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमें बताइए कि आपका जो रिसेंट पब्लिकेशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या आपने उसमें किया है, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? डॉक्टर पंकज, सो डॉक्टर पंकज से Some संपर्क technical नहीं हो snag रहा is है. there. Yes, sir. तो इस सर, जैसे आपका हर्बल गार्डन का भी प्रपोजल है, एक चीज और देखने में आई है आपके क्षेत्र में. हमने कुछ प्रयास पिछले दिनों मिलके किया भी था आपके साथ, हमने कुछ फील्ड विजिट्स भी किए ये देखने के लिए कि इस सिराज के क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं. ये देखने में आया कि इस क्षेत्र में टेक्सास बकाटा के संरक्षण में लोगों ने काफी योगदान दिया है. तो उस विषय में कुछ कहना चाहते हैं आप टेक्सास के बारे में? Sir, regarding taxes bucket type, taxol was being extracted, and I feel it is an endangered plant or tree. So now we can have a scientific approach to increase the taxol level in the plants by inducing organisms, microorganisms. So this we need to take up some research so that the taxol level in the plant could be increased. जी 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 जी. सो लोग जो हैं वो अभी मैंने देखा है कि इसको इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस पौधे के बारे में काफी रुझान है उनका, और काफी छोटे छोटे स्तर पे मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में काम हो रहा है. लोगों ने चिरायता की खेती भी की है, लोगों ने कुठ की खेती भी की है, लोगों ने अतीश की खेती भी की है. कुछ कुछ प्रयास जो हैं वो उस स्तर पे किए गए हैं. तो आपके स्तर पे एक तरह से यदि कोई ऐसा फोकल पॉइंट या कोई इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह शुरू होता है तो निश्चित रूप से लोगों को इसमें काफी फायदा होगा. डॉक्टर पंकज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर पंकज, डॉक्टर पंकज से हमारा संपर्क नहीं है. चलिए सर, मैं लास्ट में आप कोई संदेश देना चाहें हमारे स्टेक होल्डर्स को कि किस तरह से उनको आगे भविष्य में आपको क्या उम्मीद लगती है कि कैसे काम करना चाहिए? So in future, our institution will be an information center for medicinal plants. And with your association, we will take this project in a way of establishing a best medicinal, high altitude medicinal plant garden here in this valley. जी. And thirdly, we are open to all the academic level people and as well as the general public of this Siraj area to have look with this information center and as well as to have knowledge on medicinal plants. Here we have seen this, people are more interested in growing all these plants. So we in association with Ayush as well as with our horticulture department, so there should be a scope open to general public that they can have all scientific knowledge starting from growing with horticulture college and with medicinal value with our college and with your Ayush department with further expanding it and taking it to a next level. So thank you very much, sir, for sparing time to be with us and for this program, short program, लोक आयुर्वेद ज्ञान गंगा, जिसमें हमने बुरांस के विषय में जानकारी ली. और
मुझे लगता है कि पारंपरिक रूप से भी बुरांस के जूस को बहुत कम संसाधनों से अपने बुद्धि विवेक से किसान इसका प्रसंस्करण करते हैं, इसके शरबत भी बनाते हैं, जूस भी बनाते हैं, लेकिन उसे उस स्तर पे बनाना कि जो कि नियमानुसार ठीक से बने और हाइजीनिक हो और लाइसेंस की कैटेगरी में आने के बाद उसका उपयोग किया जाए, तो डॉक्टर राजू ने जो विचार दिए हैं गुलकंद बनाने के, उसका फ्रीज ड्राइड पाउडर बनाने के, इन्फ्यूजन बनाने के, मुझे लगता है ये काफी लाभदायक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट आपसे अंत में एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये आपका जो इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन में डिफरेंस क्या समझते हैं आप, किस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज इन्फ्यूजन एंड व्हाट इज डिकॉक्शन, एंड दोनों में सावधानी क्या रखनी चाहिए और दोनों में से श्रेष्ठ अच्छी चीज क्या है? Sir, infusion for generally to these general people, it is like this. Infusion is that without breaking the cell wall of the plant structure. Whatever, when it is infusion is that you are taking the product and heating it at 80-degree boiling temperature for certain period of time. That becomes infusion. When you break and make into a powder and boil it for a long time, all the cell level extracts are coming out and that becomes a decoction. So generally, herbal things with infusion goes well because one particular plant, it may have hundreds of compounds. It may have hundreds of compounds. In that, maybe around 50, 60 may be beneficial. We can't separate all 100 it is too expensive. Unless it have some good potential, like as you said, with Taxol or something, or Vinca alkaloids or something like that, it have some specific uses, it could be ventured. If not, every compound or every seed or every plant, it has n number of chemicals in that. So now, which is beneficial? Major beneficials we get through infusions. So in certain plant, and what level, which compound you need, dependingly you need to use. In this case of brands, you have certain compounds with infusion, you get good color. So that's what we need from that. जी, So तो आपका कहना है it is a way. And coming to and general thing is that everyone say that herbal infusions as herbal chai. So here it is that chai is mentioned only to the plant Thea sinensis. It is for tea. The tea product is tea, whereas herbal product is a herbal product where we say herbal tea. So there is a mixture between tea and herbal products. So Yeah, of only course it in can be future said it will be herbal tea. mixed. If tea is there, only we can say tea. वासुदेवाय धन्वन्त्राय अमृतकलाशा हस्ताय सर्वमाया विनाशानाय